Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4. Today we are going to start our lesson number 15 from chapter number 6, Water and Power. Today our topics are: first one is natural resources of water, second, fresh and salty water, third one is water cycle, fourth, sources of water. Learning outcomes. You can explain natural water resources. You can explain the difference between the fresh and salty water. You can define the water vapor. You can define the water cycle, and you can explain the Pakistan sources of water. Our first topic is natural resources. A natural resources is what people can use which comes from the natural environment. For example, natural resources are air, water, wood, oil, wind, energy, natural gas, iron and coal. यानी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट से मिल रही होती हैं, जिसके अंदर हवा, पानी, लकड़ी, तेल, नेचुरल जो आपके और रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर मिनरल्स वगैरह आ जाती हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, या एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर सूरज वगैरह आ जाता है, ये सब जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. Our next point is natural resources of water. Water resources come in many forms, but the three main categories are salt water, groundwater, and the surface water. Water resources are sources of water that are useful or potentially useful to human. It is important because it is needed for the life to exist. Many uses of water include agriculture, industrial, household, recreational, and environmental activities. Virtually all of these human uses requires fresh water. Fresh water. Fresh water is any naturally occurring water except seawater and brackish water. Fresh water includes water in ice sheets, ice caps, glaciers, icebergs, bogs, ponds, lakes, rivers, streams, and even underground water called groundwater. 3% of the Earth's water is fresh. 2.5% of the Earth's fresh water is unavailable, locked up in the glaciers, polar ice caps, atmosphere, and soil. You can see in the picture. Our next topic is salty water. Salty water is water from a sea or ocean. On average, seawater in the world's oceans has a salinity of about 3.5%. This means that every kilogram, roughly 1 liter by volume of seawater, has approximately 35 grams of dissolved salt. Next point is water vapor. What is vapor? Do you know? Water vapor is a water that is in the form of a vapor or a gas. It is a part of the water cycle. When the liquid water is heated to boiling temperature 100 degrees Celsius, it all turns into vapor. यानी जब आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उससे आपका पानी जो है वो गैस में शिफ्ट हो जाता है या वेपर्स में शिफ्ट हो जाता है. Our next point is water cycle. Do you know about the water cycle? What is water cycle? The cycle of processes by which water circulates between the Earth's oceans, atmosphere, and land, involving precipitation as rain, snow, drainage in streams and rivers, and return to the atmosphere by evaporation and transpiration. You can see in the picture. Our next topic is source of water. The major water sources in Pakistan are rainwater, groundwater, and rivers. The irrigation system of Pakistan is the largest integrated network in the world. There are three major storage reservoirs, 19 barrages, 12 inter-river link canals, 45 independent irrigational canals, command and over
1,22,268 water courses. Groundwater and the water from dams, lakes, and rivers themselves are the major freshwater resources in Pakistan. In Pakistan, sources of water are rainfall, wells, tube wells, water pumps, dams, and barrages. Our first water source is rainfall. Pakistan's water comes from rainfall. Around 60% of precipitation comes from monsoon rains. A significant proportion is distributed during winter, December to March weather patterns. Due to Pakistan's diverse geography, rainfall tends to vary significantly from regions to region. Much of the country is arid or semi-arid, with three-quarters of Pakistan receiving less than 250 millimeters of rain per year and drought are common in many areas. पाकिस्तान का जो सबसे मेन सोर्स है वाटर का वो रेनफॉल है और रेनफॉल का जो पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है हर एरिया का और इसी वजह से वहाँ का जो लैंड है वो सेमी एरिड वहाँ की जो लैंड है वो एरिड भी है और सेमी एरिड भी है एरिड मीन ड्राई है कुछ एरिया में ड्राई है कुछ में बहुत ज़्यादा ड्राई है कहीं पे ड्रॉट है यानी ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर है और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे 250 मिलीमीटर्स बारिश जो है वो सालाना जो है वो नहीं होती इसीलिए पाकिस्तान का थ्री क्वार्टर हिस्सा जो है वो कह लें कि जो है काश्तकारी के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है वो बिल्कुल ड्राई है सेकंड वन इज वेल्स अ वेल इज एन excavation or structure created in the ground by digging, driving, or drilling to access liquid resources, usually water. The oldest and the most common kind of well is a water well to access underground in the underground aquifers. The well water is drawn up by a pump or using containers such as buckets that are raised mechanically or by hand. Wells have traditionally been sunk by hand digging as is the case in rural areas of developing world like Pakistan. There are many wells in our country even today where there is no supply of piped water. पाकिस्तान के अंदर आज भी जो है बहुत सी जगहों पे जो है कुओं के जरिए जो है पानी जो है उसको हासिल किया जा रहा है और आप इन कुओं की तस्वीर जो है अ, देख सकते हैं Our next source of water is tube wells. A well consisting of an iron pipe with a solid steel point and lateral perforations near the end, which is driven into the earth until a water bearing stratum is reached when a suction pump is applied to the upper end. Tubes also installed to control the maintenance of water logging and the subsequent silently damaging many parts of the Indus Basin. पाकिस्तान के अंदर इंडस बेसिन के एरिया के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबल्स लगाए गए हैं ताकि वाटर लॉगिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सके ट्यूबल्स जो है वो बेसिकली वेल्स की जो है वो मॉडर्न फॉर्म है और इसके अंदर जो है मोटर्स और इंजन वगैरह यूज़ किए जाते हैं और स्टील पाइप जो है उसे इंस्टॉल किया जाता है Our next point is solar pumps. Solar water pumps are specially designed to lift water for irrigation, horticulture farms, gardens, domestic use, drinking, and other similar applications. These systems are best alternatives for Pakistan's areas where there is no electricity or scarcity of power supply. अब ये उन एरियाज के लिए सूटेबल है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से एरियाज के अंदर सोलर पंप्स जो है उनको इंस्टॉल किया गया है स्पेशली उन एरियाज के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद नहीं है Our next source of water is dams. A dam is a barrier that stops or restricts the flow of water or underground streams. Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, and industrial use.
There are approximately 150 dams in Pakistan, the major chunks of dams built from 1960 to 1975. Pakistan has pledged that it holds the title of owning the largest dam on the earth, which is the Turbela Dam. Our next point is barrages. A barrage is a type of low head diversion dam which consists of a number of large gates that can be opened or closed to control the amount of water passing through. बेसिकली बैरेजेस जो होते हैं वो रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं और डैम्स के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि वाटर कंट्रोल जो है उसको किया जा सके, कितना पानी किस एरिया को देना है कितना नहीं देना, उसको कंट्रोल करने के लिए बैरेजेस जो है वो बनाए जाते हैं. This allows the structure to regulate and stabilize river water elevation upstream or for use in irrigation and other systems. At present, Pakistan has three large dams and many small dams in this system. These dams are controlled by 19 barrages. You can see in the pictures. Okay, dear students, today your home task is from page number 51. First question is write about the sources of fresh water in Pakistan. आपको sources जो हैं fresh water के पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी हैं. The answer is the sources of water in Pakistan are rainfall, wells, tubewells, streams and rivers. Second one is explain the differences between a well and a tube well. आपको differences बताने हैं या difference बताना well और tube well के दरमियान. Answer is a well is a large hole dug in the ground to obtain water from underground sources, and tube wells are made by drilling deep holes in the ground. A tube is pushed into the hole, water is pumped out by electric or diesel pumps. यानी वेल जो होता है एक बड़ा सा घड़ा जो है वो खोदा जाता है ताकि पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको हासिल किया जा सके और उसके लिए बकेट वगैरह जो है वो यूज की जाती है. जबकि ट्यूबवेल जो है वो वेल की मॉडर्न जो है वो यानी कि शेप है और इसके अंदर ड्रिलिंग के थ्रू जो है होल किया जाता है और उसके अंदर ट्यूब जो है उसको इंसर्ट किया जाता है ताकि और वाटर पंप जो है उनके थ्रू जो है या इलेक्ट्रिक डीजल और इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है या इलेक्ट्रिक पंप्स जो है वो लगाकर जो है वाटर जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है. Our question number 3 is name some of the ways in which water is stored. अब आपको वो तरीके बताने हैं जिनके थ्रू हम पानी जो है उसको सेव कर सकते हैं. आंसर इज वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम्स, रिजर्वर्स एंड टैंक्स. तो वाटर जो है हम उसको डैम्स के अंदर, रिजर्वर्स के अंदर और टैंक्स जो हैं उनके अंदर यूज कर सकते हैं और जब हमें जरूरत पड़े हम उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, dear students, let's start our bookwork page number 52. Part A. Look in a dictionary or encyclopedia and find out more about these things. First one is reservoir. Reservoir are large natural or an artificial lake used as a source of water. Second one is glacier. A river of ice is called glacier. Third one is dam. A barrier that stops the flow of water is called dam. Fourth one is barrage. A barrier across a river to prevent flooding. यानी वो बैरियर या रुकावटें जो रिवर्स जो है उसको कंट्रोल करती हैं ताकि फ्लड्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और फ्लडिंग से जो है एरियाज को बचाया जा सके. तो उसके लिए बैरेजेस बनाए जाते हैं, बंद बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर ताकि वाटर फ्लो जो है उसको कंट्रोल किया जा सके. फिफ्थ वन इज रिसोर्स. अ सप्लाई ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रिसोर्स. रिसोर्सेज वो ज़राए होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं या वो मटेरियल होता है जो हमें सप्लाई किया जाता है. Our next point is canal. Canals are artificial waterways to supply water. यानी कैनाल्स जो होती हैं वो रिवर से निकाली जाती है और ये आर्टिफिशियल तरीकाकार होता है उन एरियाज तक पानी पहुंचाने का जहाँ पे पानी मौजूद नहीं होता. नेक्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Electricity produced by generators that are pushed
बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टर्बाइन, machine for producing continuous power in which a wheel is made to revolve by fast moving water, steam or gas। टरबाइन जो होती है वो एक मशीन होती है जो व्हील नुमा होती है और मूव करती है राउंड फॉर्म में, और इसके साथ साथ जो वाटर, स्टीम और गैस जो होती है उसको फास्टली जो है वो मूव करती है, जिससे एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट वन इज जनरेटर। जनरेटर मीन प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस की जाती है या क्रिएट की जाती है वो जनरेटर जो है वो कहलाती है। जनरेटर जो होता है वो किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। Our next part is B part. Label the diagram. You can see a picture with blank lines. आपको इन लाइंस को फिल करना है। वाटर साइकिल की ये पिक्चर है और आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर दी गई है। आप उस पिक्चर की मदद से अपनी बुक पे दी गई पिक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जितनी भी ब्लैंक लाइंस दी गई हैं उनको फिल कर सकते हैं। Guidelines for parents. Dear parents, all the main points discussed in the lecture, make sure students listen the lecture carefully. Question number 1, 2 and 3 discussed in the lesson. So ask your child to do first, second and third all questions on notebook. But first draw title page. Make sure that spelling should be correct while writing answers. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the points and topics very well. Complete your home task on time. Thank you.